Well, children, I welcome you all to my online class. Today, my dear children, I have come up with a new topic, and that is descriptive paragraph. It is a part of your writing section of English grammar, and some of you might be well familiar with this title. But let me tell you, my dear children, that this year CBSE has made certain changes, especially in the syllabus of English subject for class 9th as well as class 10th. And in class 9th, they have included this. I'll show you. Now you can see on your screens the syllabus of English language and literature for class 9th for the session 2020-21 is given. Clearly you can see here 2020-21. So this is the syllabus of your English, where there will be 3 sections, A, B, C, and A is reading skills 20 marks, B is writing skills with grammar 30 marks, and section C would be of literature textbook as well as supplementary reading text. So I would like to show you this portion, especially this writing skills and contextual grammar. You can see here, yes, see this, the third question here. Okay, writing an informal letter on a situation, oblique, descriptive paragraph, person, place, event, or diary entry in about 150 to 200 words based on visual or verbal cues. And this particular question would be of 10 marks. Earlier, diary entry was of 8 marks, but this time CBSE has made certain changes. Now instead of 8, it would be of 10 marks. And my dear children, already we have discussed about informal letters. We have discussed, there is one video where you can discuss about, where you can get good idea about informal letter. Then we have also discussed about this diary entry also. We have discussed it. There is a video on this. And today we will be discussing about descriptive paragraph. Okay. So you should be very, very careful, my dear children, because this question contains 10 marks, and 10 marks, it plays a very, very, very crucial role in getting good marks in the exam. So let's start this descriptive paragraph. Descriptive paragraph, yes. Descriptive paragraph is a detailed account of any given topic, person, place, event. It helps the reader to feel and sense the details written by the writer. The details given in the paragraph must appeal to the 5 senses: sight, taste, touch, smell, and hearing. Now see, my dear children, what is this descriptive paragraph? See, 3 conditions would be there. Either you have to write a descriptive paragraph on a person, place, or event. Okay, either there would be a person, place, or event, and you have to write a paragraph regarding a person, place, or event. What do you mean by descriptive? Descriptive means describing or explaining. Okay, that is called descriptive. Fine. So you have to be very, very careful while writing descriptive paragraph. See what is written here. It helps the reader to feel and sense the details written by the writer. Means whatever you write, it must be written in such a way that the reader must feel and sense the details, okay, that are written in that descriptive paragraph. देखिए बच्चों, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो होता है वो किसी घटना पर, किसी स्थान को लेकर, किसी जगह को लेकर या किसी व्यक्ति को लेकर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखा जाता है.
और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इस तरीके से लिखा जाना चाहिए कि जो पढ़ने वाला शख्स है वो सही मायने में जो कुछ लिखा है उसे वो महसूस कर सके, एहसास कर सके, और उसे ऐसा एहसास हो जैसा वो खुद उस जगह पर या उस व्यक्ति के साथ मौजूद है। ठीक है, सी देयर इज़ वन फिगर ऑफ स्पीच दैट इज़ कॉल्ड इमेजरी. Okay, my dear children, imagery is that figure of speech where, you know, when somebody is narrated to you and you start visualizing that whole thing, that is called imagery. Fine, and that thing must be there in your descriptive paragraph. देखिए बच्चों, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसे हम इमेजरी कहते हैं. इमेजरी में क्या होता है कि जब कोई आपको कोई कहानी बताता है या किसी घटना का जो है आपको किसी घटना के बारे में आपको सुनाता है, और उस समय अगर आप सही मायने में उस पूरी घटना को अपनी आँखों के सामने देख सकते हैं, उस घटना को आप कल्पना कर सकते हैं, तो वो फिगर ऑफ स्पीच को कहा जाता है इमेजरी. और ऐसा ही आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होना चाहिए. The details given in the paragraph must appeal to the five senses: sight, taste, touch, smell and hearing. कहने का मतलब ये है कि जो भी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आप लिखेंगे वो इस प्रकार से लिखा होना चाहिए कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो उसे एहसास कर सके. अगर किसी चीज़ के स्वाद के बारे में आपने लिखा है तो वो व्यक्ति उस स्वाद को महसूस कर सके, एहसास कर सके. उस तरीके से आपकी जो है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होनी चाहिए. The main purpose of writing a descriptive paragraph is that the reader must feel what the writer is describing. So actually reader must feel what a writer is describing. Well, while writing a descriptive paragraph, there are a few points to keep in mind. Okay, कुछ पॉइंट्स को हमें दिमाग में विशेष तौर पे रखना है जब हमें एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना होगा. ठीक है, लेट्स सी दोज पॉइंट्स. लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट: गिव प्रॉपर इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक. ठीक है, the first thing is whatever topic it is. For example, if a question is given to you where you have to write a descriptive paragraph on the Red Fort, for example, लाल किला के ऊपर आपको एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो ऐसे समय पर आपको सबसे पहले यू हैव टू प्रोवाइड द इंट्रोडक्शन अबाउट द रेड फोर्ट. रेड फोर्ट के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़े. सी, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. इट डजंट मीन कि द रेड फोर्ट ही आएगा. इट माइट बी एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, पर्सन की बात हो रही है, इट माइट बी योर ग्रैंड मदर. आपको अपनी ग्रैंड मदर के ऊपर अगर लिखना है एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, तो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा अपनी ग्रैंड मदर के बारे में. ठीक है, उनका नाम क्या है, ठीक है, उनकी एज क्या है, ऐसा कुछ छोटा सा एक आप. ठीक है, when writing about a person, focus on the physical details. This is a very important thing. अगर if you are writing a descriptive paragraph, okay, on a particular person, किसी व्यक्ति के ऊपर आप लिख रहे हैं, तो you should focus on the physical details. ठीक है, इट डजेंट मीन कि आप फिजिकल डिटेल्स के अलावा दूसरे बारे में बात नहीं करेंगे. यू कैन टॉक अबाउट द बिहेवियर ऑल्सो, यू कैन टॉक अबाउट द इमोशनल एस्पेक्ट ऑल्सो, बट मेन फोकस शुड बी ऑन द फिजिकल डिटेल. उनकी हाइट, पर्सनैलिटी, फैट है कि स्लिम है, और ये सारी चीज़ों का आप स्पेशली आप इन पर फोकस करोगे. व्हेन राइटिंग अबाउट अ प्लेस और एन इवेंट, डिस्क्राइब द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स अबाउट इट and highlight all the small details of the place or event. And if you are writing a descriptive paragraph about a place or an event का मतलब क्या हो गया? For example, आपके स्कूल में annual function हुआ, for example, let us just take it for instance. So you have to write a descriptive paragraph, okay, and the topic is annual function, okay, of your school. तो अब आप एनुअल फंक्शन के बारे में कैसे लिखोगे? द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड रिगार्डिंग दैट एनुअल फंक्शन, दैट थिंग यू हैव टू राइट. मे बी इट इज़ अबाउट द चीफ गेस्ट, मे बी इट इज़ अबाउट समथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है, जैसे आप अपने हिसाब से उसको एहसास कर सकते हैं. तो जो मेन चीज़ आपके दिमाग में आती है
इन बातों पर विशेष ध्यान आपको देना होगा. यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज अबाउट these things. Third point comes, language used should be semi-formal. Try to be simple but attractive and appealing. Another important point is, whatever language you are using, it must be semi-formal. See, formal language means what? Respected sir, this is to inform you. Respected sir, most respectfully I would like to inform you. You should avoid using such type of sentences, because that would be a kind of formal writing, and that type of writing is used especially when we are writing a formal letter. So we should not go for such type of writing. Okay, so avoid such type of things. And we should not write a descriptive paragraph in informal way. इनफॉर्मल वे क्या होता है? हाय, हाउ आर यू, जैसे हम लोग डायरी एंट्री में क्या कर रहे थे, हाय डायरी एंट्री, ऐसे कर, जिस तरीके से हम इनफॉर्मल वे में लिख रहे थे वैसे भी हमें नहीं लिखना है. सो वी शुड बी सेमी फॉर्मल, मीन्स बहुत फॉर्मल में भी नहीं रहना है, इनफॉर्मल में भी नहीं रहना है, ऐसे हम लोग को रहना है. ओके, देन ट्राई टू बी सिंपल बट अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग. डोंट गो फॉर टफ वर्ड्स. अगर आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, डजंट मीन ना कि यू आर यूजिंग डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन योर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. दैट वुड स्पॉइल द मूड ऑफ द रीडर. जो रीडर होता है, जो पढ़ने वाला होता है, वो आपके बहुत टफ वर्ड्स यूज़ करने से वो आपसे इम्प्रेस नहीं होगा. आप बहुत कठिन शब्दों का यूज़ करोगे और कठिन फ्रेजेस का यूज़ करोगे तो वो आपसे इम्प्रेस नहीं होगा, क्योंकि उसको फिर वो बोरिंग लगेगा. फिर उसको लगेगा कि यार ये क्या वर्ड्स लिखा है, मुझे इसकी मीनिंग्स नहीं पता, मैं जाकर डिक्शनरी में खोजूं. इट्स बेटर टू अवॉइड दिस. तो वो आपको मार्क्स भी नहीं देगा. सो आपको करना क्या है? यू शुड बी you should be precise regarding your descriptive paragraph. Use simple language, okay, but attractive and appealing. But language ऐसी होनी चाहिए कि attractive होनी चाहिए और सीधी बात पहुँचे रीडर तक. Okay, that is what. So these things you have to keep it in your mind. How to write a descriptive paragraph? Next topic. Let's discuss this also. A descriptive paragraph is a focused and detailed, rich account of a specific topic. Okay, means you have to provide a detailed account of any topic. मतलब पूरा description आपको बताना. Descriptive itself means detailed explanation of something. Paragraphs in this style often have a concrete focus, the sound of a waterfall, the stench of a skunk spray, but can also convey something abstract such as an emotion or a memory. Now see what is written here. I will tell you, I'll explain this portion. देखिए, पैराग्राफ का जो स्टाइल होता है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल वाटरफॉल की बात आप कर रहे हो. For example, if you are writing something regarding waterfall in your descriptive paragraph, the reader should literally feel, he should literally hear the sound of the waterfall. अगर आप किसी waterfall के बारे में descriptive paragraph में लिख रहे हैं तो वो इतना effective way में लिखिए कि जो reader है वो literally उस sound को महसूस करे कि हाँ पानी गिर रहा है. ओके, दैट इज वॉट इट इज रिटन हेयर. और एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं. यू कैन गो फॉर इमोशंस और ए मेमोरी, दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल. ओके, सम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स डू बोथ. These paragraphs help readers feel and sense the details that the writer wants to convey. इससे होता है क्या है कि जो readers होते हैं वो feel करते हैं उस चीज़ को जो लिखा हुआ है और वो sense भी करते हैं उन चीज़ों को. Fine. To write a descriptive paragraph, you must study your topic closely, make a list of the details you observe and organize those details into a logical structure. Then, while writing a descriptive paragraph, first of all, we must study the topic very closely. Then we should have a proper knowledge of the topic. Then we should make a list of the details, and then we have to organize them in a chronological order. Chronological order means what? For example, if you are writing a descriptive paragraph on annual function of the school, अब उसमें आपको क्या करना है? अगर एनुअल फंक्शन ऑफ स्कूल के बारे में आप लिख रहे हो तो आप ऐसा तो लिखोगे नहीं कि प्रोग्राम 5 बजे ख़त्म हुआ, पहले आपने ऐसे स्टार्ट कर दिया. ऐसे तो नहीं करोगे. आप एक सिस्टमेटिक वे में आओगे. पहले प्रोग्राम कितने बजे शुरू हुआ, कौन चीफ गेस्ट था, फिर लैम्प लाइटिंग सेरेमनी हुई, देन व्हाट हैपेंड, देन इन दैट वे यू विल कम इन a proper chronological order. So we must follow that chronological order. Example of a descriptive paragraph. Now we will see one example. See what is the question here.
write a descriptive paragraph in about 150 to 200 words about your hometown. Take the information given below in the input. Now see, you are supposed to write a descriptive paragraph about your hometown, okay, and input, certain information is provided in the input also. कुछ आपको outline भी दिया हुआ है, idea मिल जाएगा उसको. So your hometown is what? It is written here Shimla, okay, Shimla. Shimla, northern part of India, oak tree and green lawn, hills covered in pine trees, streets were going, snowy winters, smell wood burning in fireplaces. In summer, people walking or jogging, secure and comfortable. Visit Shimla once a year. Feel nostalgic. So थोड़ा सा एक आउटलाइन दे दिया आपके हेल्प के लिए यहाँ पे. इन्हीं सारी चीज़ों को आपको जो है कंसिडर करना है और इनकी हेल्प लेते हुए यू हैव टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. ओके. Feel nostalgic, this word feel nostalgic, it means that sometimes what happens when we think about something that happened in the past and when we get emotional, that is called nostalgic. ठीक है, जब पास्ट की कोई घटना को हम याद कर लेते हैं, बीते हुए समय की कोई घटना को याद करके जब हम बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं नॉस्टैल्जिक फीलिंग. ठीक है, स्पेशली ये कब देखने को मिलता है, जैसे फेयरवेल हो रहा है, क्लास 10th के बच्चे या क्लास 12th के बच्चे, 10th के बच्चे उस स्कूल में जहाँ पे 10th तक के बच्चे पढ़ते हैं, या फिर 12th के बच्चे जब वो स्कूल छोड़ के जाते रहते हैं, तो एक वो बहुत ज़्यादातर बच्चे जो है नॉस्टैल्जिक फील करते हैं. नॉस्टैल्जिक मतलब वो फिर याद करने लगते हैं कितने साल पहले स्कूल में आए थे, कैसे हमने पढ़ाई की, कैसे हमारा समय बीता, एंड आज वी आर लिविंग दिस स्कूल. So that is actually called nostalgic. Now let's see this example. Okay, my hometown. So very first thing what you have to write is, first of all, the heading must be written in between. Okay, in between you can see my hometown. You may write it in capital letters, that would be fine, or अच्छा होगा, my hometown. Then you will start the paragraph, and there is no such date, writer's name, or time, salutation, complimentary closure, nothing is there. Very simple format is. Okay, now let's start this. I grew up in Shimla, which is located in the state of Himachal Pradesh in the northern part of India. देखिए यहाँ पे कितने अच्छी तरीके से पहले शिमला के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दिया गया है. It is located in the state of Himachal Pradesh. It is in the northern part of India. Large old oak trees and green lawns surrounded by hills covered in pine trees form my neighborhood. Okay, means my house is surrounded by hills that are covered in pine trees, then old oak trees and green lawns are there. The streets are quiet with only the sound of birds singing and some cars passing every once in a while. Okay, now see my dear children, what is happening when we read this line, the sound of birds singing, तो literally we could imagine, हम महसूस कर सकते हैं हाँ birds की आवाज़ को. ठीक है, then some cars passing every once in a while, फिर ये भी हम महसूस कर सकते हैं कार को पास होते हुए ना, सेंस कर सकते, फील कर रहे हैं हम लोग लिटरली. ओके, ड्यूरिंग द कोल्ड स्नोई विंटर्स मोस्ट पीपल स्टे इनसाइड and one can smell wood burning in fireplaces and see smoke coming out of chimneys. और कोल्ड के समय में तो जो विंटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर वेरी स्नोई एंड people prefer staying inside, and one can smell wood burning in fireplaces and one can see smoke coming out of chimneys. Okay, it seems like the whole city is covered with snow. Very true. Shimla, we all know it very well. It is very quite famous for snowfalls and all sort of things. Okay, in summer one can see people walking or jogging, then smell of fresh grass and see squirrels jumping from tree to tree. And in summers you can see people walking around, jogging. Winter season, what is happening, people they prefer staying indoors, but in summer they come out of their houses, they walk, they jog, then smell of fresh grass. I could literally smell that fresh grass. ये होना चाहिए, sense
आपके सेंसेस को अपील करे तो आप भी उस स्मेल को फील करोगे फ्रेश ग्रास की. एंड यू कैन सी स्क्वेरल्स, तो आप अपनी आंखों आप कल्पना कर सकते हो हाँ गिलहरियों को जंपिंग फ्रॉम ट्री टू ट्री. When the sun rays fall on the snow, it shines like a diamond or anything like a pearl. सही बात है, जब गर्मियों के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी तो रहती नहीं है, बहुत तेज़ धूप तो रहती नहीं है, लेकिन जब वो सूरज की किरणें जब बर्फ़ पर पड़ती है तो कैसे बर्फ़ चमकता है ना. इट शाइन्स लाइक ए डायमंड और एनीथिंग लाइक ए pearl. My hometown makes me feel secure and comfortable. Okay, it makes me feel secure. I'm very secure there and I'm very comfortable. Now I usually visit Shimla once a year, so I don't have a lot of time to spend a lot of time there at Shimla, so I normally visit once a year. Okay, whenever I go there, I feel like I'm in heaven. Okay, so it is no less than a paradise. Definitely it is like a paradise. Paradise means Swarg. I feel nostalgic when I think about Shimla, and I really get emotional when I think about Shimla. So this was actually an example of descriptive paragraph. I hope you have understood. My dear children, keep one thing in your mind. It is not a story. See, there is a difference between story and descriptive paragraph. In story, you create a story out of your imagination. Okay, but in descriptive paragraphs, you should be very precise and you have to write the actual thing. Okay, what actually you feel about something. Okay, that is what descriptive paragraph is all about. It is not a story writing. Story writing is very different from descriptive paragraph. Now let's go to the homework section. Now let's see this homework. Write a descriptive paragraph in about 150 to 200 words on, and the topic is my loving sister. Okay, take the information given below in the input. Now see, some information is also given. Strong and caring sister, currently staying with her friend's family, pursuing an advanced academic program, tries to fit time in a busy schedule to call or text us, sacrificed so much to be the best, understanding, intelligent, funny and charismatic, brings solution to every problem. So these are a few qualities, few points, information about your loving sister, and now you can elaborate all these points into a very beautiful descriptive paragraph. Okay, so do it, and very simple, no very tough or complicated format is there. Very simple format, only heading must be there, then you will write accordingly, and then but it must be in such a way that reader should feel whatever you have written, he should sense whatever you have written. So I hope you have understood this. My dear children, go through it, do it properly, and if you have any confusion, please drop your questions in the comment section. I would definitely respond to your questions, and it is of 10 marks, so you have to be very careful regarding such questions. So that was all from this video. Take care and God bless you.